देखो ABP सांझा टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 ਤੇ। जनवरी 2022 ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਡੋਜ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਯਾਤਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਓ। लैंड बॉर्डर के राही अमेरिका च दाखिल होने वाले लोगों को फुली वैक्सीनेटेड होना जरूरी होगा। बाइडन प्रशासन ने जनवरी 2022 तो सारे ट्रक ड्राइवर्स जरूरी ते गैर जरूरी यात्रियों के लिए कोरोना वैक्सीन दियां दोवें डोज लाजमी कर दित्तियां ने। रोजाना कुल 30,000 ट्रक अमेरिका कैनेडा बॉर्डर के राही गुजरते हैं। अजिहे च ट्रक ड्राइवरों को फुली वैक्सीनेटेड होना पवेगा। हालांकि सरकार ने फुली वैक्सीनेटेड लोगों के लिए क्वारंटीन का नियम खत्म कर दिता है। Anywhere between 10 and 20% of the 120,000 truck drivers, Canadian truck drivers that cross into the United States and Canada border will exit the industry. उधर कैनेडा 72 घंटे च विदेश तो वापस परतन वाले नागरिकों के लिए कोविड-19 के मॉलिक्यूलर टेस्ट खत्म कर चुके हैं। नागरिकों के लिए RT-PCR टेस्ट तो छूट का ऐलान किया गया। 72 घंटे तो वध समय तो विदेशी यात्रा के लिए मॉलिक्यूलर टेस्ट की जरूरत को बरकरार रखा गया। I just got news of that this morning and it was like, get rid of this test altogether. This is highly punitive to ordinary Canadian families and it affects Canadian businesses. कैनेडा अमेरिका सरहद खुलण बाद अमेरिका ते कैनेडा के लोगों ने कैनेडा सरकार को कोरोना टेस्ट के नियम को हटाने की मांग की सी। Progress like that is really exciting. You know, our entire industry, our entire economy is really looking forward to getting back to normal. All of these border policies are being actively looked at the moment. The last very important piece is the elimination of the PCR test. They didn't see an influx of Americans coming when the border opened up, again because of having to come into Canada and have to come with a negative test. We still have travel advisories in place recommending that people don't travel unless it's absolutely necessary. We need to be cautious and we need to exercise prudence in terms of traveling to places where COVID-19 is still spreading wide, quite intense. ये सवाल ते मंगा सरहदी इलाकों के मेयर्स ने चुकियां जिन्हां कैनेडा अमेरिका बॉर्डर खुलण बाद कैनेडा सरकार दे वल्लों लाजमी कीते कोरोना टेस्ट नूं हटाउण दी मंग कीती सी। उन्हां तर्क दिता सी कि $150 तो $300 के करीब वाधू खर्च लोगों की जेब ते भारी पै रहा है। I agree, but it's very hard when you're right next to one of the great natural wonders of the world. We like to say the Coca-Cola of municipalities. It's one of the biggest brands on the planet. And imagine right now if tourism just stopped tomorrow, and that's exactly what happened. And I've spoken with many people who, in tourism, we've been through a lot of things, and resilience is part of our DNA. We've been through 9/11, H1N1, SARS, mad cow, currency fluctuations, among many other challenges, but we always bounce back. This one seems to be induced by us, and it's preventable by us. We've got a chance, as Congressman Higgins said, we can undo some of the harm that we've done by removing a redundant test that doesn't make us any safer. It just adds costs and encumbers people's visits. The majority of people that come here come by rubber tire. We're within a day's drive of almost half the population of North America. I've always believed mayors to be at the epicenter of solving problems for people. And these four individuals over the past several months have been stalwarts in assisting in our efforts to get both the U.S. and Canadian governments to do the right thing on behalf of our mutual citizens. I was a kid that played ice hockey up in Canada. I spent more summers in Canada than I did in Buffalo. Our economies in Western New York and Southern Ontario in particular have been integrated. Our life qualities are integrated. Today marks the day that loved ones who have been separated for the past 19 months will finally be reunited. 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਕਸਡ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਹੱਦ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
पंजाब और पंजाबियत की परछाई। अब देखें एबीपी सांझा टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 पर। एबीपी सांझा देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर से अभी संपर्क करें। एबीपी सांझा, जोश, जज्बा, जुनून।